Yes. Okay. So let us see the MCQs. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट लेवल 1 के जो MCQs है वो खत्म किए थे. राइट. यस, फिर भी उसमें से कुछ बचे हुए जो MCQs है या गिने चुने MCQs है वो देखेंगे फटाफट. ये देखो, ये 34 वाला देखो ठीक से. Okay, just read. For the top of the tower, 19.6 meter high, a ball is thrown horizontally. If the line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree with the horizontal, then the initial velocity of the ball must be. Okay, देखो ठीक से क्या हमको दिया हुआ है. Suppose this is the tower of some height. ओके, ये कुछ हाइट का टावर है और यहाँ से हमने एक बॉल थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u इतने स्पीड के साथ. ओके, जो हमको निकालना है. और ये दिया हुआ है कि ये बॉल जब सीधा जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राउंड पे जाके गिरता है तो जहां पे भी वो गिरता है तो उस पॉइंट का अगर हम देखेंगे एंगल बना हुआ जो है वो दिया हुआ है. See this second condition here. If the line joining the point of projection, मतलब ये, okay, this is A here, this is the point of projection, and the point where it hits the ground, मतलब ये point, देखो ये जहां पे वो हिट करता है उसको हम बोल सकते हैं B. So इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, ये लाइन, it makes an angle of 45 degree with the horizontal. What does it mean? Which angle is 45 degree here? से देखो ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है. ओके, और हाइट जो है इस टावर का तो वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी 19.6 मीटर, राइट. सो सिंस दिस एंगल इज 45, this is already 90, this must be 45, and since this is 45 45 90 triangle, the sides opposite to 45 degree, मतलब ये side और ये side, they has to be equal, and hence we can say that this side, this range here is also going to be 19.6 meter only. So the height is also 19.6 and range is also 19.6. Okay, and already we have derived the relationship between these two. If you remember, range और maximum height इन दोनों के बीच में already हमने एक relationship derive किया था. Actually हमने जो y coordinate होता है तो उस y coordinate के लिए equation derive किया था. जैसे कि हम जानते हैं y is given as minus of half gt square, where t can be written to be equal to x upon u, correct है. And if we replace it by that here, then we get this y is equal to minus of half into g into x upon u का whole square, where it can be written as y is equal to minus of gx square upon 2u square, correct है क्या? Yes, so this is the equation for y. And also that if we put the y equal to h here and x is equal to r here, then also you can get the relationship between r and h in this case. So y के बदले क्या रखना होगा हमको? h, और minus of g into x के बदले क्या रखना है हमको? r, so that we get this gr square upon 2u square as a final. But here it is given that h is same as r, as we can see, because h is 19.6 meter and r is also 19.6 meter. They are numerically same. That means if we just replace this h by r here in this formula, then what can we get here is r is equal to minus of, or forget about the minus sign. Actually this h is also going to be minus, negative, and that's why minus minus will get cancelled and we'll be left with r is equal to gr square
upon 2u square, so that this r gets cancelled once, and we are left with this 2u square, or u square can be transferred that side, so as to get this as u square equal to gr upon 2, correct hai? And then we can just take the square root on both sides, so as to get this u is equal to root of gr upon 2, and hence we can say that this will be u is equal to root of g matlab kitna 9.8. हेलो, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ। 2 मिनट दीजिए, मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। यस, सो जी का वैल्यू जो है तो वो हमको पता है ऑलरेडी, इट इज 9.8, एंड ऑल्सो आर इज ऑल्सो देयर। रेंज जो है तो वो भी हमको पता है ऑलरेडी, it is 19.6, right? So just replace all these values here and get the final answer. Okay, so u becomes actually equal to root of 9.8 into 19.6 the whole divided by 2, so that is 2 gets cancelled and 19.9.8 will be left inside, and hence u becomes actually equal to root of 9.8 into 9.8 again, which happens to be actually 9.8 only. So this is the initial velocity with which the projectile must be fired. Okay, this is the A is the correct option. Chalo, theek hai. See the next one. Yes, a ball is projected upwards from the top of a tower with a velocity
50 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how much time from the instant of throwing will the ball reach the ground? Okay, अभी यहाँ पे देखो ground पे हमको लाना है ball को. तो this is the actually situation in which the projectile motion के जो फॉर्मूले है तो वो तो हम यहाँ पे अप्लाई थोड़ा कम कर सकेंगे क्योंकि इसके अंदर पूरा जो है, देखो मैं बताता हूँ सिचुएशन कैसा है. Yes, see here. This is suppose the ground and suppose the here it is a tower. यहाँ पे टॉवर है जिसका हाइट हमको 70 मीटर दिया हुआ है, बराबर 70 मीटर. यहाँ से एक बॉल हमने 30 डिग्री एंगल करके थ्रो किया, ठीक है, 30 डिग्री एंगल करके हमने ये बॉल उस तरफ ऊपर तरफ थ्रो किया. सो द बॉल विल जस्ट ट्रेवल अपवर्ड्स फर्स्ट, then it will just travel downwards, and after that it will come to the same level first, ठीक है ना, at a particular time it will come to the same level and then it will go further and fall back on the ground here. तो देखो अभी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो यूज करने से रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होगा? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉल टू रीच एट द सेम लेवल वंस अगेन. तो यहाँ पे आने के लिए, इस पॉइंट पी पे आने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नो डाउट. लेकिन हमको क्यू पॉइंट पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो एक्चुअली निकालना है. दैट इज नोवेयर, दैट इज इसके लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला तो है नहीं. बट यहाँ पे हमको क्या करना है, विल हैव टू अप्लाई द बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स हियर. देखो यहाँ पे अगर एक बॉल जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर 30 डिग्री एंगल पे अगर थ्रो किया जाता है तो कैन यू एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार? जस्ट चेक और जस्ट हैव दिस वेलोसिटी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स एट लीस्ट. तो 50 को अगर हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, उसको हम ux बोल सकेंगे. तो वो बनेगा 50 इंटू cos 30, करेक्ट है, ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. And at the same time vertical component can also be written here to be simply 50 into sin 30, correct है, ये हो गया दो components. Okay, and now using that we can say this u bar actually. So u bar equal to क्या होगा यहाँ पे, u bar will actually be equal to, और चलो forget about u bar or vectors here, just try to apply the second kinematic equation here because we want the time, right? टाइम हमको निकालना है. तो टाइम ढूंढ के निकालने के लिए इस पॉइंट का खासियत क्या है? कैन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन हियर? इस ओरिजिन के हिसाब से ये देखो ये 70 मीटर है हाइट, तो इसलिए इस ओरिजिन के हिसाब से हम नीचे इधर 70 मीटर जा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे -70 कोऑर्डिनेट होगा उसका. y कोऑर्डिनेट विल बी -70, नो डाउट. So here it is -70. This is the y coordinate actually. X coordinate we don't know what it may be, but y coordinate is going to be -70, no doubt. And ये y coordinate निकालने के लिए हमारे पास second kinematical equation होता है projectile motion के अंदर, याद होगा आपको. y is equal to, ये चलो पहले हम second kinematical equation लिखते हैं नॉर्मल वाला, जो कि होता है s is equal to ut plus half a t square, करेक्ट है. बट अगर हमने ये वर्टिकल मोशन में अगर यूज किया तो s के बदले आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, और इस तरफ u के बदले आ जाएगा उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे uy है, uy जो ही यहाँ पे 50 इंटू साइन थीटा के बराबर है, याद रखो ठीक से, इंटू टाइम t जो कि हमको पता नहीं है, प्लस यहाँ पे हाफ एज इट इज, एंड a के बदले क्या आने वाला है, माइनस ऑफ g आने वाला है, माइनस ऑफ g, एंड t जो है वो फिर से हमको पता नहीं है, नो डाउट. तो अभी यहाँ पे s के बदले हमको क्या डालना है, -70 डालना है, क्योंकि इस पॉइंट का खासियत ही ये है, इसका y कोऑर्डिनेट जो है तो वो -70 रहने वाला है. तो y कोऑर्डिनेट को -70 बनने के लिए लगने वाला टाइम हमको ढूंढना है. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अभी uy के बदले क्या आने वाला है, ये देखो u sin थीटा, where u is going to be 50 and theta is going to be 30, so it will be 50 sin 30, correct है, yes. So here it will be 50 into sin 30 replaced here as uy, and t is again kept as it is, and minus, here it is going to be half of,
G is again replaced by 10, or let us keep it as 9.8, or just keep it as G, we'll decide it later. And T square is again not known. Okay, so here it will be minus of 70 is equal to 50 into, we know that sine 30 is going to be half, right? So just put this half here into T as it is, minus half GT square as it is. And then we can say this will be minus of 70 is equal to 25T minus, अच्छा G को अगर 10 ले लेंगे ना, just take G as 10 here, no problem, because it will be better, because all the numbers are multiples of 5. So take this G as 10 approximately. So this 2 cancels with this 10, leaving behind 5T square, right? And if we take all the terms in this side, then we can get this as 5T square minus minus 25T minus 70 is equal to 0, correct? Hai? So if we divide this whole thing by 5, then we get this T square minus 5T minus 14 is equal to 0, correct? Hai? And then we can just get it as, yes, 14 को factorize करो. 14 can be factorized as 7 and 2, but it should be minus 7 and plus 2, right? So that we get this as T square minus 70 plus 2T minus 14 equal to 0. And if we take T common from the first two brackets here, we are left with T minus 7 inside the bracket, right? And again 2 can be taken common from the next two brackets so as to get this T minus 7 left inside the bracket once again, so that we get this T plus 2 in the first bracket and T minus 7 in the second bracket. And then we can just be left with T plus 2 equal to 0 or T minus 7 equal to 0, which gives T equal to minus 2 or T equal to 7. But as this time cannot never be negative, so we can accept this T equal to 7 as a final answer or correct option, okay, which is already there in this option 3 here. Getting it? Yes. Next is just try this 38th one. Two balls A and B are thrown with a speed u and u by 2 respectively. Yes, both the balls cover the same horizontal distance before returning the plane of projection. Okay, मतलब लेवल पे सेम लेवल पे आने के लिए वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब उनका रेंज सेम है. इन शॉर्ट, the angles of projections of ball B is 15 degree with horizontal, then the angle of projection of ball A is, it's okay, we can find it out. See, initial speeds of this first ball is given to be u and second ball is given to be u by 2, and range is same, so that means r1 is the range of this first ball, r2 is the range of second ball, and it is given that r1 equal to r2, no doubt. And theta 1 of this first ball is given to be 15 degree and theta 2 of the second ball is to be found out. So we can just do it by the formula for range, which we already have. What is the formula for range here? Range is always equal to u square into sine 2 theta upon g. So if we use it for first ball, then r1 becomes actually equal to u1 square, matlab u square into sine theta 1 upon g. And r2, how much it is? r2 is actually going to be u by 2 का whole square, correct है, क्योंकि उसका दूसरा जो है ये u by 2 है, दूसरे का initial velocity, into sin theta 2 divided by simply g. But since r1 is going to be equal to r2, so if you put the values here, then we get this u square into sin theta 1 upon g is equal to again u by 2 का whole square, मतलब ये क्या बन गया, वो u square by 4 बन गया, right? So u square by 4 into sin theta 2 upon g, so that this g gets cancelled from both sides. Even u square also
gets cancelled from both sides, and what we are left with is simply sine theta 1 is equal to 1/4 of sine theta 2, correct hai? And since theta 1 is given to be 15 degree here, we can just put it that here and get it as, तो थीटा 1 के बदले अगर पुट 15 डिग्री डाल दो तो हमको मिलेगा sin 15 डिग्री is equal to 1/4 of sin theta 2. And if we take this 4 in that side, then we get this 4 sin 15 is equal to sin theta 2, and hence sin theta 2 comes out to be equal to 4 times of sin theta sin 15 degree, बराबर है? And then we can just be able to find out this theta 2 as sin inverse of 4 sin 15 degree. But here just check sin 15 degree जो है तो वो हमको पता है क्या, दिया है क्या? sin 2 थीटा होता है ना, अरे शिट 2 थीटा लेना चाहिए था हमको. फॉर्मूला में क्या है, sin 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा एक्चुअली. यस, इधर भी 2 थीटा आएगा, इधर भी 2 थीटा 1, इधर भी 2 थीटा 2. Yes, and then we can just solve this further. ये देखो, अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे ना आगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा यू जी कैंसिल हो गया और बचा हमको sin 2 थीटा 1 ओके इज इक्वल टू 1/4 of sin 2 theta 2. Yes, and then we can just take this 4 in this side so as to get this 4 sin 2 theta 1, मतलब ये 2 into 15 degree here, which is going to be equal to sin of 2 theta 2 here. And then we can just be say that 4 sin 2 times of 15, how much it becomes here is 30, correct hai? And here it is going to be sin 2 theta 2, which is to be found out. So sin 30 is what? It is half. So we can just replace it by that and get this 4 into half, which is equal to sin 2 theta 2. And then we can just cancel this 4 and 2 here, so that we get this 2 is equal to sin 2 theta 2, and which is not possible at all. अरे शिट, फिर से गड़बड़ हो गया. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल बी इज गिवन टू बी 15 डिग्री. हमने ए का लिया, so just correct, make it correct. From this step onwards we have to make the correction. Okay, यहाँ पे theta 1 theta 2 के बीच में रिलेशनशिप तो आपको मिल गया है. Here theta 2 is actually given to be 15 degree, not theta 1. Okay, so what we can get here is, if we put this theta 2 as 15 degree here, then we can get sin 2 theta 1 is going to be 1/4 of sin 2 times of 15 degree, and hence we get this sin 2 theta 1 is equal to 1/4 of sin 30, and sin 30 is nothing but half. So what we can get is sin 2 theta 1 is equal to 1/4 of half, which is going to be 1/8, correct hai? 1/8. And if we take this sign in that side, then we get this 2 theta 1 is equal to sin inverse of 1/8, 1/8. And if we take this 2 also in the denominator, okay, then we can get this theta 1 to be equal to 1/2
into sine inverse of 1 by 8 as a final, which is already there in the option number. See here, 1 by 2 into sine inverse of 1 by 8 is there in the option number 2 here. It is going to be the correct one. Yes, 39th also. Check. At what angle with horizontal should a ball thrown so that its range r is related to the time of flight as r is equal to 5t square. तो देखो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा याद रखो, वो बहुत काम में आएगा. देखो ठीक से, suppose this is the vertical, this is the horizontal, and suppose this is the projectile motion of the particle, right? So this is the r, that is the range, okay, and u is going to be the initial velocity, which can be resolved into two components. One is u cos theta, means ux we can say, and the second one is u sin theta, which is denoted by uy here. एक बात समझो इसमें ठीक से कि जब ये प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ux इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता है टाइम t के लिए. इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो उसका चलो ठीक है एक्सेलरेटेड मोशन है, और इसके लिए इसकी वजह से हमको वहां पे काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. But in horizontal motion, it's a uniform motion, and that's why we can just use this formula: distance equal to speed into time. So if we use it here, then we get this distance horizontal direction is r, speed in the horizontal direction is ux, and time in the horizontal or time तो होता ही नहीं है horizontal vertical, time to time होता है. So that is the time of flight, which is the time required for this projectile to reach at the ground again. That is capital T here. So this is going to be the relationship between r and t always, remember. So if we use it here, it should be r is given to be 5t square. इससे हमको क्या मिलता है, ux का जो वैल्यू है no, there should be correction, some correction here, क्योंकि r equal to ux into t भी होता है और r is equal to 5t square भी दिया हुआ है. So if we just equate both of these values here, then we get this ux into t is equal to 5t square. So that t gets cancelled once, and we are left with ux is equal to 5t. And time of flight t का जो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, t is equal to क्या होता है, t is equal to uy square, sorry 2uy upon g होता है. यस, तो अगर हम ये यूज करेंगे तो इससे हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे क्या मिलता है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी एक्चुअली ये, चलो ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है हमको मिला हुआ है यहाँ पे, this time of flight can be put here in this formula, so that we get this ux is equal to 2 times of, sorry, ux is equal to 5 times of time of flight, which is nothing but 2 times of uy upon g, right? And g can be taken as 10 for our convenience, and ux can be replaced by u cos theta, and that is going to be equal to 5 times of 2. 5 times of 2 means 10, so 10 into u sin theta, and that is to be divided by g, which is going to be 10 again. So that is 10 gets cancelled, u also gets cancelled from both sides, and we are left with cos theta is equal to sin theta, which happens only when theta is equal to 45, because cos 45 is 1 by root 2 and sin 45 is also 1 by root 2. So we can get the theta value as 1 by theta value as 45 degree, because cos theta and sin theta are equal.
Okay, that means theta is going to be 45 degree here. Just try to do this 40. A projectile is projected with the initial velocity 6 I bar plus 8 J bar. Then its horizontal range is, देखो यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल रेंज का, जो मैंने लिख के दिया था आपको ऑलरेडी। दो फॉर्मूले लिख के दिए थे हॉरिजॉन्टल रेंज के, याद है? तो उसमें से दूसरा वाला जो था तो वो इस तरह से था ux इंटू यू वाई अपॉन जी, बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ ux अपॉन यू वाई, ux इंटू यू वाई अपॉन जी। Here this 6 I bar happens to be ux and 8 j bar, so 8 happens to be uy, and if we want to find out the range then we can get simply 2 into 6 into 8 upon g, matlab 10. So that just we can solve this further and get it as 6 8s are 48. 48 into 2 is 96. So 96 divided by 10, which comes out to be 9.6 meter, which is already there, is option number 2 here. Okay. Let us see this next one. The maximum range of a gun or horizontal range is 16 kilometer. Okay, मतलब horizontal direction में एक horizontal जो गन का जो range है वो 16 किलोमीटर है. Then muzzle velocity of the shell must be. This can be solved by using the formula for range. What is the formula for range? We already have that. R is equal to u square sine 2 theta upon g. Correct है? But we know that the maximum range is maximum only when theta is equal to 45. Correct है? So we have to put this theta equal to 45 here. So if you put theta equal to 45, sine of 2 times of 45 means sine of 90. It becomes 1, and then this R max actually becomes equal to u square by g, and this R max is given to be 16 kilometer. If you replace it by that here, then we get this 16 kilometer. 16 kilometer means 16,000 meter, which is actually going to be u square upon g, where g is going to be 10. Okay, so we can just solve this further and get that u square is equal to 16,000 पे और एक zero देना पड़ेगा हमको. And now if we just take the square root on both sides, then we can be able to get that 16 का square root 4, और उसके ऊपर 2 zeros आएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 zeros है, बराबर है. तो इसलिए फिर ये u जो है वो बनेगा 400 meter per second, which is going to be there in the option number 2 here. Yes. फिफ्थ वाला क्वेश्चन करो एक बार ठीक से देखो. A boy aims at the bird from a point at a horizontal distance of 100 meter. Okay, the gun can impart a velocity of 500 meter per second. Okay, at what height above the bird must he aim his gun in order to hit? देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझा सबको ठीक से? This is the diagram. And suppose that we have this a gun here. यहाँ पे gun है. Okay, or a boy aims at the bird from the point at a horizontal distance of 100 meter.
तो 100 मीटर, ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। यस, gun can impart the velocity of 500 meter per second to the bullet. Okay. Yes. At what height above the bird must he aim his gun in order to hit it? Okay, so suppose bird is here at this height h1. ओके, h1 इतने हाइट पे सपोज यहाँ पे बर्ड है, ठीक है। बट अगर ये बॉय जो है वो अगर सीधा इस डायरेक्शन में, अगर इस बर्ड के डायरेक्शन में अगर एम करता है, निशाना लगाता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के कारण क्या होगा कि ये जो बुलेट है वो इस तरह से मूव करेगा। तो इसका मतलब वो इट विल हिट एट दिस पॉइंट हियर। सो इन ऑर्डर टू हिट इट एट दिस पॉइंट हियर प्रॉपरली, इट विल हैव टू एम एट द हायर पॉइंट। एक पर्टिकुलर हायर पॉइंट पे उसको एम करना पड़ेगा, यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको टारगेट करना पड़ेगा, ताकि वो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करने की वजह से वो यहाँ पे जाके हिट कर दे। ओके, तो दैट इज वी हैव टू आस्क हियर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो उसका है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी का एंगल इसके साथ कितना बना हुआ होना चाहिए, इस पॉइंट के साथ जो टारगेट पॉइंट है उस टारगेट पॉइंट का एंगल कितना बनेगा, ताकि फाइनली जब ये जो बुलेट है वो जब फायर किया जाएगा तो इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट हियर एंड इट विल हिट द बर्ड। तो हमको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस एज h2। इसको हम h2 बोल सकते हैं, वेयर h2 इज गोइंग टू बी द पॉइंट एट विच द टारगेट इज शॉट। मतलब जहां पे हमने निशाना लगाया, ठीक है, उस पॉइंट का जो हाइट है वो h2 मान लेते हैं, जो कि h1 से थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। ओके, तो देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में अगर थ्रो किया, तो u कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज u cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कौन सा है, ये देखो ये थीटा रहने वाला है। सो इफ यू जस्ट कंसीडर दिस ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करेंगे ना, ये देखो ये जो है ये हाइट h2 है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है कि ये थीटा रहेगा, तो ये h2 रहेगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है, सो अगर वो 500 है, तो दिस 500 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। वन विल बी u cos theta, मतलब 500 into cos theta. Yes, and cos theta can be found out from this triangle only. And another component will be 500 into sin theta, where theta is here. Okay, it's okay. We'll solve this tomorrow. Actually, time भी आपका हो गया है already. So let us stop here and solve this sum tomorrow. Okay, so let us end here. Thank you all of you.